जिंदाबाद, नेपाल भारत मैत्री जिंदाबाद, नेपाल भारत छिमेकी मुलुक, सद्भाव छ हाम्रो। सदियौंदेखिको जनता बीचको मैत्री भाव छ राम्रो। बुद्धको यो जन्मभूमि, शान्ति भूमि हो नेपाल। वसुदैव कुटुम्बकम्, छाती हाम्रो छ विशाल। नेपाल भारत छिमेकी मुलुक, जिंदाबाद जिंदाबाद। Greetings to our distinguished chief guest, His Excellency, guest of honor, our special guest, ladies and gentlemen. I would like to begin by acknowledging the bilateral relations of Nepal with its immediate neighbor India. Nepal and India are supposed to have exemplary bilateral relations for innumerable reasons. Our two countries share an intimate and symbiotic bond on the occasion of 142th Gandhi anniversary that started from 2nd of October 2013. To give more insight about the program, I would like to welcome Mr. Ruparana Prajajoginikar. His Excellency Mr. Ranjit Ray, Ambassador of India to Nepal, to this program. Gandhi Global Family was established in 2002 in India by senior Gandhian activist Ms. Nirmala Deshpande. The present president of Gandhi Global Family India is Mr. Ghulam Nabi Azad, Central Union Health Minister of India. Gandhi Global Family has many branches all over the world. Its Nepal branch, Gandhi Global Family Nepal, was established in 2012. Chairperson of Gandhi Global Family Nepal is Mr. Surya Dusad.
President of Nepal-India Human Development and Friendship Association, Gandhi Global Family Nepal organized 3 days peace celebration on the occasion of 144th Gandhi anniversary starting from October 2nd, 2013. Mr. Ranjit Ray, Indian Ambassador of India to Nepal, followed by inauguration of Nepal Bharat Maitri Chikitsa Sibir by His Excellency Mr. Ranjit Ray, Indian Ambassador of India to Nepal. Today's program is part of the celebrations where we will be welcoming the newly appointed His Excellency the Indian Ambassador to Nepal. We also have the inauguration of Nepal Bharat Maitri Chikitsa Shibir. Screening of the diabetic patients will also be performed during the program of Gandhi Global Family Nepal. Also today's program will unveil Sports Wing and Pashupati Unit of Nepal-India Human Development and Friendship Association, New Nepal. Last but not the least, we will be formally concluding the 3-day peace celebrations hosted on the occasion of 144th Gandhi anniversary that started from 2nd of October 2013. Welcome to all. To begin the formal proceedings, I'd like to invite Mr. Shurya Bhushal, Chairperson and SARC Coordinator, Gandhi Global Family Nepal, President, Nepal-India Human Development and Friendship Association, and Patron of Nepal Bharat Maitri Hospital, Mitra Park, to be seated on the dais. Our Honorable Chief Guest, His Excellency Mr. Ranjit Ray, Ambassador of India to Nepal, please kindly be seated on the dais. Next, I'd like to invite our guest of honor, Sri Jaydeep Majumdar, Deputy Chief of Mission of the Embassy of India in Nepal. May I call upon our special guest to be seated on the dais, Mr. Piyush Srivastav, Councillor of Political and Economic Cooperation of the Indian Embassy in Nepal. Mr. Govinda Tandon, Member Secretary, Pashupati Area Development Trust. I'd also like to invite our special guest, Dr. Durgesh Man Singh, former Nepali Ambassador to India. Our distinguished guest, Mr. Govinda Prasad Upadhyaya, CEO, Jyoti Bikash Bank Limited. Mr. Ghananath Ojha, former Health Secretary. Mr. Srikant Regmi, former Secretary, Government of Nepal. Principal Dr. Durga Datta Dhakal, former Dean of the Institute of Animal Sciences. DIG of Nepal Police, Ganesh Raj Rai. Mr. Guru Durga Das, Samrakshak Adhyapak, Sabda Chintan Sangh. Ms. Indira Manandhar, President, Religion for Peace Nepal and Vice President of Image Channels. Shyam Khadka, MD, Nepal Bharat Maitri Hospital, Mitra Park. Dr. Surendra BC, Director, Nepal Bharat Maitri Hospital. Dr. Giridhari Sharma, Director, Nepal Bharat Maitri Hospital. Pawan Pathak, Director, Nepal Bharat Maitri Hospital. I now welcome Dr. Poonam Karna, Yamini Shahi and Lakshmi Bastola to present badges to our chief guest, guest of honor, special guest and other guests. I now request all our distinguished guests to stand up when the national anthem is played.
I welcome Dr. Giridhari Sharma, Director, Nepal Bharat Maitri Hospital. यस कार्यक्रमका सभापति महोदय श्री सूर्य प्रसादज्यू, जो गान्धी ग्लोबल फ्यामिली नेपालको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, नेपाल इन्डिया ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड फ्रेन्डसिप एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र गान्धी ग्लोबल फ्यामिली सार्क कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ र नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलका संरक्षक हुनुहुन्छ। आजका प्रमुख अतिथि महामहिम श्री रञ्जित रेज्यू, नेपालका लागि भारतीय राजदूत, विशिष्ट अतिथि श्री जयदीप मजुमदारज्यू एन्ड अन्य अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित महानुभावहरू, महात्मा गान्धीको 144औं जन्मदिवसको शुभ अवसर पारेर अक्टोबर 2 देखि अक्टोबर 4 सम्म गान्धी ग्लोबल फ्यामिली नेपालले 3 दिने पिस सेलिब्रेसन मनाउने क्रममा आज यस कार्यक्रमको क्लोजिङ सेरेमनीमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेष गरी महामहिम राजदूत श्री रञ्जित रेज्यूलाई कार्यक्रमको संयोजक र हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि बहुमूल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी सेवा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै पुनः स्वागत गर्छु। महामहिमज्यू हालसालै नेपालको लागि राजदूत भई आउनु भएकोमा मलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रा दुई देश बीचको सम्बन्ध अझै गाढा सुमधुर बन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। मलाई लाग्दछ असल स्वास्थ्य मानिसलाई मानसिक शान्ति दिन्छ, अस्वस्थ शरीर स्वयंमा अशान्तिको स्रोत हुन्छ। यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी महात्मा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर स्वास्थ्य चेतना जाहेर गर्ने उद्देश्यले गान्धी ग्लोबल फ्यामिलीको आयोजनामा नेपाल भारत मैत्री चिकित्सा शिविर अन्तर्गत हामीले आज अक्टोबर 4 र अक्टोबर 5 तारिक फ्री ब्लड सुगर स्क्रिनिङ ल्याब टेस्ट राखेका छौँ। आफ्नो रक्त परीक्षण गरी मधुमेहको चिन्ताबाट मुक्त हुनुहोस्। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमसहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। अन्त्यमा फेरि पनि एकपटक महामहिम राजदूतज्यू लगायत सम्पूर्ण गण्यमान्य अतिथिहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Now we would like to formally welcome the Indian envoy, His Excellency Mr. Ranjit Ray. For this, I would like to welcome Mr. Surya Bhushal, Chairperson and SARC Coordinator, Gandhi Global Family Nepal, President, Nepal India Human Development and Friendship Association, Patron, Nepal Bharat Maitri Hospital. I'd like to invite Dr. Shyam Kharka, Managing Director, Nepal Bharat Maitri Hospital, and different committees of Nepal India Human Development and Friendship Association. Dawa Khusri Guru, Rasua Kathmandu Contact Committee Coordinator, Lakpa Tamang, Mr. Puri Sherpa, Director, Nepal Bharat Maitri Hospital, Solokhumbu, Sindhupalchok Kathmandu Contact Committee Coordinator, Mrs. Indramaya Tamang, and Mr. Shiva Saran Raj Bhandari, representative of Nepal India Human Development and Friendship Association's Pashupati Unit.
Honorable Chief Guest to inaugurate the program by lighting the banners. Thank you, His Excellency. Let us take a moment to remember great Mahatma Gandhi, the father of India, and late Bidi Nirmala Deshpande by offering garlands to their portraits. We now head to signing of a memorandum of understanding of Nepal Bharat Maitri Chikitsa Shibir between representative of Government of India, Embassy of Government of India, and Mr. Surya Prasad, Chairperson, Gandhi Global Family, Nepal. Thank you, representatives from both Nepal and India. May I welcome our chief guest, His Excellency Mr. Ranjit Ray, Ambassador of India to Nepal, to inaugurate the Nepal Bharat Maitri Chikitsa Shibir. How many people will benefit? Raja
I'd like to welcome Chairman of Nepal Karate Federation, Dava Gurung. Now present you a cultural piece, Tamang Dance, organized by Mr. Lakpa Tamang, Coordinator, Niudupa Roswa Kathmandu Contact Committee. Theme of the song is Our Pride and Cultural Identity. And this song reflects that Nepal and India are interlinked through common cultures, even in the presence of wide variety of cultural identities. Both the countries are keen on saving their diverse cultures, which is the responsibility of young individuals. At present, we have to work from our own individual level to preserve our pride and identity. We head to the inauguration of Niudupa Sports Wing and Niudupa Pashupati Unit. For this, I'd like to invite His Excellency Indian Ambassador to Nepal, Mr. Ranjit Ray, to inaugurate the Niudupa Sports Wing and Niudupa Pashupati Unit. बहुत सारे कार्यक्रम जो है many programs. We have a long time, so that's
May I request His Excellency, our Chief Guest, to deliver a speech on closing ceremony of 3 days peace celebration on the occasion of 144th Gandhi Anniversary Day. Mr. Surya Bhusal, Chairperson, Gandhi Global Family Nepal, and President of the Nepal-India Human Development Friendship Association, Dr. Durgesh Mansingh, former Ambassador of Nepal to India, Mr. Gobind Tandon, Member Secretary of the Pashupati Area Development Trust, many distinguished dignitaries seated on the dais, ladies and gentlemen, dear friends. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अत्यंत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है यहाँ आपके बीच में आके और ऐसे अच्छे अवसर पर आके जब हम गांधी जी की याद कर रहे हैं और जो गांधी जी ने कुर्बानी दी भारत की आज़ादी के लिए, अहिंसा और प्रेम का जो उनका संदेश था पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, तो बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पे हम लोग सब एकत्रित हैं, नौजवान भी हैं और लोग भी हैं और सब हम लोग गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गांधी ग्लोबल फैमिली जो है, जो पूरी दुनिया में गांधी जी के संदेश का प्रचार कर रही है, तो नेपाल में भी गांधी ग्लोबल फैमिली बहुत एक्टिव है और इस अवसर पर हम लोग नेपाल भारत मैत्री चिकित्सा शिविर का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, शुगर की जिनको बीमारी है, उनको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और समस्या का समाधान क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है जो हम लोग गांधी जी की जयंती के अवसर पर कर रहे हैं। मैं निर्मला देशपांडे जी का भी स्मरण करता हूँ, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और जिन्होंने गांधी जी के मार्ग पे जो चली और कुछ ही साल तक उन्होंने काफ़ी गांधी जी का मैसेज फैलाने के लिए केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, केवल गांधी स्मारक निधि या राजघाट पर ही नहीं, पर सारी दुनिया में उन्होंने गांधी जी का मैसेज फैलाया और उन्होंने सर्वधर्म सम्मान के लिए और महिलाओं के अपलिफ्ट के लिए, जो हमारे जनजाति लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए बहुत काम किया। तो इस अवसर पर मैं निर्मला जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार 50 मिलियन नेपाली रुपए डायबिटीज़ के प्रोग्राम्स के लिए गांधी ग्लोबल फैमिली को ग्रांट में देगी, ताकि ये डायबिटीज़ का काम आगे बढ़ा सकें। और गांधी ग्लोबल फैमिली नेपाल 11 डायबिटिक हेल्थ कैंप्स पेशेंट्स के लिए फ्री, बिना खर्चे के पेशेंट्स को ये एक फैसिलिटी मिलेगी, एक सर्विस मिलेगी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल के। और लगभग 30,000 लोगों को इससे फ़ायदा होगा। 30,000 लोगों को ये डायबिटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच दूर दराज